हेलो गाइस, स्ट्रॉन्ग डे इन द मार्केट टुडे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट ऑन ट्रेडिंग व्यू। उसके बाद टीसीएस का Q4 एंड FY26 रिजल्ट्स रिलीज हुआ था कल। सो उसको भी देखेंगे एंड विल डीप डाइव अ लिटिल बिट इनटू कैसे वो लोग फ्यूचर प्रूफ कर रहे हैं देयर रेवेन्यू फॉर द नेक्स्ट 3 to 10 years. एंड ऑल्सो आई गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ डेटा अबाउट द म्यूचुअल फंड मार्केट SIP डेटा जो एम्फी ने रिलीज किया है। तो फटाफट लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्क्रीन कैप्चर में आ गया and I'm moving straight into the tradingview.com. tradingview.com में आ गया मैं. So over here, first things first, अगर आप लोग आज का डेटा देखोगे, you'll see that today market closed around 1.16% higher, which is much better than yesterday. Yesterday there was a negative sentiment about Iran US war. आज kind of looks everything is like positively developing. RSI भी नया हाई मार दिया है at around 54. उसके बाद वॉल्यूम इज ऑल्सो स्लाइटली बेटर देन yesterday and more than the average of the last 14 days, indicating that the bulls have the major strength in the market. तो मार्केट को मेरे को ठीक ही लगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज मार्केट में व्हाट आई नोटिस वाज दैट बैंक निफ्टी डिड वेरी वेल. अ लॉट ऑफ बाइंग केम इन HDFC, एक्सिस, ICICI बैंक. तो बैंक निफ्टी रिकवरिंग वेरी स्ट्रांगली आफ्टर दैट गैप अप 2 days बैक. तो ओवरऑल मार्केट लुक्स इन गुड शेप. हम लोग ऊपर जा रहे हैं. मैक्स टू मैक्स टाइम कंसोलिडेशन का थोड़ा पैटर्न हो सकता है, और अदरवाइज इफ एवरीथिंग इज गुड, सूनर और लेटर over the next maybe 1 month or 2 months we might reach the previous all time high. Let's see, we never know. इसके बाद now what I'm going to talk about is TCS का result. For that what I've done, I've come quickly to trendline.com. TCS के results पे बात करते हैं. TCS the largest IT company in India. Q4 के results में they've grown 5.4% QOQ their revenues. ऑपरेटिंग मार्जिन 10 बेसिस पॉइंट से एक्सपेंड हुआ है, विच इज़ गुड. नेट मार्जिन 19.4%. EPS भी अच्छा खासा ग्रो हुआ है 12.2%. इनफैक्ट ओवर द लास्ट 3 quarters गाइस, इन लोगों का EPS हैज़ बिन ग्रोइंग सिक्वेंशियली. तो दैट इज़ अ गुड सिग्नल. एंड ऑल्सो TCS बीइंग TCS, उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो कन्वर्जन, मतलब फ्रॉम प्रॉफिट टू नेट कैश फ्लो, जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो CFO टू पैट कन्वर्जन है, दैट इज़ अराउंड 106%. Which is itself industry leading and obviously expected from a mature cash generating business. FY26 की रेवेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं. इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस इज दैट कॉन्स्टेंट करेंसी में TCS की नेट रेवेन्यू हैज़ fallen by 2.4% on a yearly basis. This is the first time this has happened since its listing in 2004. तो काफ़ी important डेटा पॉइंट ये है. और कॉन्स्टेंट करेंसी के लॉस is because of their volume loss, right? इसके वजह से ही हुआ है. The IT fear, the volume loss, the lesser number of deals they might have actually been able to onboard or win this particular year. Obviously you can see कि 4.56% की normal YOY growth हुआ है in revenue, but that is basically because rupee का depreciation हो गया था, and TCS is mostly export services, so that is the reason. Other than that, margins, operating margins last 4 years में highest है. net margins last 4 years में highest है. इस particular result के बाद they have also announced the 31 rupees dividend for their shareholders, something which IT companies really like to do to keep their shareholders happy. And एक और चीज़ important चीज़ is that their headcount has grown by around 1,500. Current headcount is around 584K. This is good because previously TCS and some major IT companies ने बहुत सारा firing किया था of their employees. 10,000 20,000 employees got kicked out because of the AI fears and productivity gains that they were getting through it. But abhi their hiring has kind of improved. I'm quite sure they're not hiring entry level engineers, but they're hiring laterally some very smart or some higher level engineers जिनके पास technical expertise है और उनका काम AI cannot easily replicate. Other than that, some interesting commentary from their management. उनका जो CEO है के कृतिवासन सर, they've said that they are this particular third quarter में sequential growth रहा. They have 3 mega deals worth over 12 billion in TCV. उनका जो CFO, Chief Operating Officer था, they've said that their AI induced revenue that has grown to around 2.3 billion. That is because they have been accelerating their deployment in AI solutions, right?
उनका CFO ने ये बोला कि some of their investments are going to bring light a lot of different diversified revenue sources over the period of time. So let's see how that goes. And obviously very happy for TCS employees because they are again now going to finally receive their annual increments. Their HR officer has said that across all the pay grades सब लोगों को increment मिलेगा, so that is a good thing. हाँ, so now the interesting point here that I want to discuss with you guys is that देखो TCS is just an IT company right now. The problem is that उनका headcount में pressure है because a lot of the entry level work which a lot of these engineers could do, coding, basic coding and all of this stuff, AI agentic coders can easily do and replicate those entry level work. इसके वजह से initially say previously before this AI thing came out, say कोई project था with another, they onboarded a client X, right? और वो client X का काम करने के लिए TCS could bill around 100 engineers to do that work for a period of 6 weeks. तो इससे उनके billing आती थी. This is how they would earn revenue. But right now what is happening is that they are not able to say bill 100 engineers. Reason is that their client is saying, give me a second guys. The reason why this is happening is because their client is saying that now because your productivity has gone up, because many of your engineers can use AI tools to improve their productivity, it is not necessary for you to keep 100 engineers to do my work. You can do my work with say 80 engineers. तो ये जो 20-20 engineers का cut हुआ, that is directly leading to revenue losses for TCS, right? Because billing in IT companies happens on the man hours. तो एक particular resource कितने घंटे के लिए काम करता है, on that basis and their particular level of expertise and their grade of work, that is how billing is done. So that is why the lesser number of people required for each project leads to headcount reduction, and that is why जब भी balance sheet में या profitability में pressure पड़ता है, companies like TCS would eventually will eventually reduce the headcount to try to manage their operating margins. But that is it. So क्या हो रहा है अभी? So now TCS needs to earn that extra revenue, right? तो वो कैसे करेंगे ये particular thing, right? So they are now entering into the data center business. TCS will make data centers, right? They did this partnership with TPG for 18,000 crore where they are going to create gigawatt scale AI ready data centers, right? And TCS is partnership में 51% stake hold करता है, so a lot of decision making power lands is there with TCS. And the purpose of this is to basically make TCS more than just a services or a intelligence company. It is to make it an infrastructure to intelligence play. इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा सेंटर्स बनाएंगे, इंटेलिजेंस तो वो लोग ऑलरेडी सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं, राइट? तो डेटा सेंटर बिजनेस इज द न्यू रेवेन्यू सोर्स और डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू सोर्स, एंड इट इज़ अ वेरी गुड रेवेन्यू सोर्स. वाई? बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. एक चीज़ इज दैट ये एन्युइटी बिजनेस है. एन्युइटी बिजनेस मतलब हर साल मुझे हर महीने जो भी पर्टिकुलर कंपनी मेरा डेटा सेंटर को यूज़ कर रहा है, for whatever need that they have, they will pay me a rent, right? So rental income होता है. I can see visibility of income over a period of time, right? Second चीज़ है कि इंडिया में डेटा सेंटर की नीड्स बढ़ने वाली है, राइट? इंडिया में देर इज़ अ लॉट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ डेटा रूल्स, राइट? ये सोवरेनिटी ऑफ डेटा रूल्स क्या करता है इज दैट द गवर्नमेंट्स मैंडेट इज दैट इंडियन हाउस इंडियन पीपल का डेटा शुड रिसाइड लोकली इन इंडियन डेटा सेंटर्स. बाहर के डेटा सेंटर सिंगापुर, एशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए में नहीं रहना चाहिए. इट शुड बी इन इंडिया. इंडिया में करेंटली डेटा सेंटर्स आर वेरी लो इन नंबर, राइट? That is why what will happen over a period of time, the number of data centers in the country is going to keep on growing, right? So if that is going to happen, then it makes sense for IT companies to also enter into building data centers, because then they can say कि we are now working across the entire value chain of AI, entire value chain of IT. हम लोग infrastructure प्ले से AI को खेल रहे हैं एज अ प्रॉक्सी प्लेयर, हम लोग एक्चुअल AI को भी खेल रहे हैं एज अ डायरेक्टली सर्विस एज वेल एज अ सोल्यूशन प्रोवाइडर वर्किंग ऑन एजेंटिक AI and making agentic AI solutions or participating in the AI ecosystem. So this makes IT companies a full-fledged player across the entire value chain, right? So because tailwind है, data sovereignty rules mandates
companies to have Indian data stored in data centers in India. तो एक tailwind है, plus number of data centers in the country कम है, तो this leads to exponential growth in the number of data centers. और data भी आप लोगों को दिख जाएगा कि the India is supposed to grow their data center count by 3x in the next 5 years. That is absolutely huge. नाउ TCS कैसे कमाएगा डेटा सेंटर्स में? सिंपल, मैंने आप लोग को एक्सप्लेन भी किया था. They will basically earn through rental income and they will have maybe 2-3 formats of data center. एक तो कोलोकेशन data center होगा जिसमें basically you have an entire data center building where multiple companies share different resources in that building. Say company A आता है in that building and they say I need 20 servers, I need maybe 5000 terabytes of data storage. So उसको वो दिया जाता है, and as per the requirement and the cost of serving that data or storing that data उन लोगों को एक रेंटल चार्ज का आता है. तो कोलोकेशन में in one particular data center you have multiple companies sharing that. And then there will be also specialized data centers जो TCS बनाएंगे, right? These data centers will be built to suit models specified to the needs of the particular client, and because this is a customized model इसमें उनका operating margin भी ज़्यादा होगा. And then they'll also be doing the infrastructure as a service model where we'll make the high end data centers जिसमें the best quality servers will be there, एकदम like the liquid nitrogen or whatever, these cooling mechanisms whatever they have, वो cooling mechanisms use होंगे, energy efficient designs होंगे. These will be the high end costly data centers, and only the hyperscalers like Google, Amazon, Microsoft, AWS, all of these companies will be using their data centers to store Indian data of their audience in India to abide by the Indian rules. So this is how they will basically earn diversify their revenue into data centers. तो उनको एक revenue visibility दिखेगी जो currently सिर्फ अपना services export करके उन लोगों को शायद 2-3 years down the line नहीं दिख पा रहा है, because AI इतना fast grow हो रहा है, right? And also obviously other than this TCS will do a lot of acquisitions, जो अभी भी they are doing, and they can do a lot of acquisitions. Why they can do a lot of acquisitions? Because they are able to have a huge balance sheet. TCS की बैलेंस शीट अगर मैं आपको स्क्रीनर में दिखाऊँ, आप देखोगे कि TCS की बैलेंस शीट इज़ अराउंड 106,000 crores. और इतना ज़्यादा पैसा जब कोई भी कंपनी के बैलेंस शीट, कोई भी कंपनी के ट्रेजरी, कोई कंपनी के बैंक अकाउंट में रहता है, they can easily fund their inorganic growth acquisitions, right? So inorganic growth acquisitions में TCS is doing a lot of things. They have acquired and done partnerships. They've अगर आप लोग जाके कहीं पे सर्च भी करोगे, you will see that they are able to employ and partner with a lot of companies, right? Because they have this partnership. तो क्या करेंगे ये लोग? ये will go and basically look at companies जो लेटेस्ट काम कर रहे हैं इन एजेंटिक AI, लेटेस्ट AI मॉडल्स को यूज़ करके न्यू प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस बना रहे फॉर द डिफरेंट यूज केसेस इन द इंडस्ट्री. एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग ऑल ऑफ दिस देमसेल्व्स इन हाउस, दे विल जस्ट गो एंड बाय दिस कंपनीज और एक्वायर स्टेक इन दिस कंपनी. इससे क्या होगा? उनका R&D पे भी कॉस्ट नहीं हुआ ज़्यादा, but they'll get access to all the products, and then using their distribution and their entire client base, वो इन लोगों को ज़्यादा क्लाइंट्स के पास स्प्रेड करके ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाएंगे इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टू मच ऑन R&D. एंड ऐसे भी इंडियन IT कंपनीज डू नॉट लाइक टू स्पेंड ऑन R&D. लेस देन 5% ऑफ देयर इनकम goes to R&D spending. You can see this data. There's been a lot of debate on why we don't do this, and maybe this is one of the primary reasons for why India doesn't have an AI specific product or an AI specific original LLM based company in the country, right? तो एनीवेज ऑन दैट, सो ये था. तो TCS रेवेन्यू को कैसे डाइवर्सिफाई करेगा? वेरी सिंपल. एक तो इट विल डाइवर्सिफाई इट्स रेवेन्यू, इट विल ग्रो इट्स रेवेन्यू थ्रू डाइवर्सिफिकेशन. वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा सेंटर मेकिंग बिल्डिंग में आ रहा है टू गेट रेंटल इनकम, जिसको उसको विजिबिलिटी ऑफ इनकम दिखेगी. सेकेंड चीज़, इट इज़ गोइंग टू फंड देयर ग्रोथ इन रेवेन्यूज थ्रू इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस. स्टेक्स ले लेंगे कंपनी में, कंपनी को बाई कर लेंगे, उनके प्रोडक्ट सेल करेंगे अपने डिस्ट्रीब्यूशन में अपने क्लाइंट्स के पास. वहाँ से दे विल जनरेट मोर रेवेन्यू, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स इट टेक्स मोर टाइम इन सच ह्यूज MNCs टू डेवलप प्रोडक्ट्स एट सच अ स्केल, वेयर एज
a very small company can rapidly prototype and create new products at a much faster rate and change to the needs of the environment. तो ये एक important चीज़ है. So ये दोनों चीज़ से they are going to fund their growth, and also while they are doing their services export, what they will like to do is they will obviously try to win a lot of GenAI deals. ठीक है, तो GenAI TCV as a percentage of their overall TCV, ये is one metric you guys will need to, whoever is an investor in TCS or wants to invest in TCS needs to work. You guys need to see if they are able to get more revenue through GenAI deals. उनका GenAI की ऑर्डर बुक ग्रो होना चाहिए, उनका AI एंड AI बेस्ड सोल्यूशन से रेवेन्यू ग्रो होना चाहिए, उनका रेवेन्यू पर एम्प्लॉय शुड कीप ऑन ग्रोइंग. बिकॉज अगर एम्प्लॉय ज़्यादा हायर नहीं होता देन प्रोडक्टिविटी चेक ऐसे ही होगा कि पर एम्प्लॉय की रेवेन्यू बढ़े. सो दैट इज समथिंग यू गाइज नीड टू चेक. एंड ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ मे बी 3-4 ईयर्स यू विल ऑल्सो हैव टू सी कि ये जो दूसरा डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, राइट, ये डेटा सेंटर बना रहा है, ये एक्विजिशन कर रहा है, इन सबसे what percentage of their overall revenue is coming. If that is keeping on growing with the industry or better than the industry, then TCS will definitely do well. As of now TCS की stock P 17 पे है. It is at the lowest level since almost the last 10 years of data. So this shows that at least from a valuation point of view it is not expensive, but we need just valuation tells only half the story. earnings projection, future earnings growth देखना पड़ेगा. उधर अगर अभी भी आके कमेंट्री 2-3% ऑफ कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ है, विच इज जनरली व्हाट दीज गाइज डू, then that is a problem, because then you are paying for a company which has no growth. Ideally over a period of time their growth should come back, right, because these are very major companies and they have a lot of money to kind of shape or alter themselves. So say pay someone who wants to enter into CCS right now, at least from a valuation point of view, uh, and with the future not very certain, from a risk point of view, you might be a little in a better state. But obviously that is a completely personal take, unless and until you have great clarity on the future projected revenue growth. Ideally paying for 17.4 p, you should get at least 20% or 10 to 15% of revenue growth every year. Till that doesn't come back or that visibility isn't clear, if that comes back in the next 1 year, then that is good. And if that comes back, buying TCS at right this particular valuation could be a great steal. However, do not expect TCS to get a valuation of 40 जो उसको September 21 में मिल रहा था, या फिर a P ratio of 35, because I believe there's been a very major industry structural shift, and just pure play services companies को शायद वो particular valuation bands ना मिले फिर से. एनीवेज, अदर देन दिस, वन मोर थिंग जो मैं बात करना चाहता था विद यू गाइज वाज अबाउट द SIP इनफ्लोस. जो मार्च का डेटा एम्फी ने रिलीज़ किया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है. तो एम्फी इज सेइंग द SIP AUM अंडर मैनेजमेंट, जो उनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, वो घटा है ओवर फेब्रुवरी. एंड दैट इज़ बेसिकली वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. दैट इज़ हैपन बिकॉज मार्क टू मार्केट में लॉस हुआ है, बिकॉज द मार्केट इटसेल्फ हैज़ फॉलन. तो जिन लोगों ने भी SIP में ख़रीदा होगा ओवर द लास्ट 3 months, उनका NAV ऑफ ईच ऑफ द यूनिट्स मस्ट हैव कम डाउन, एंड वो मार्क टू मार्केट लॉस होने के वजह से SIP की AUM अंडर मैनेजमेंट डिक्रीज हुई है. बट 2 थिंग्स जो पॉजिटिव निकला है फ्रॉम दिस डेटा इज दैट इवन दो मार्च में डेटा, मार्च में AUM कम, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कम हुआ है, बट द पार्टिसिपेटिंग नंबर ऑफ SIP इन्वेस्टर्स इन द कंट्री हैज़ एक्चुअली इंक्रीज्ड. It has increased to 9.72 crore in March, up from 9.44 crores in February. So this is showing that our investor base of SIP, people who are doing SIP in the country, is going up, and retail investors are investing money even in uncertain phases. मतलब क्या है, ये financial understanding लोगों को भी मिल रहा है. People are getting more patient, and that is something which is good. चर्निंग भी हुआ है. अगर आप SIP स्टॉपेज रेशियो देखो, विच इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ SIPs दैट हैव बीन closed in this period of March divided by the number of SIPs that have been registered, वो रेशियो आया है अराउंड 101%. इसका मतलब ज़्यादा लोगों ने अपने SIPs को क्लोज या टेम्पोरली बंद कर दिया है, बिकॉज दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड बिकॉज मार्च बहुत घटिया महीना था फॉर द मार्केट. मार्केट बहुत ही, ये वॉर के वजह से बहुत ही नीचे गया था. इट वॉज अ वेरी शार्प सेलिंग इन द मार्केट, और
साइकोलॉजी, इन्वेस्टर साइकोलॉजी में लोग क्या करते हैं कि दे वांट टू एग्जिट, लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव पैनिक एग्जिटेड, और एट दिस एस आई पीज को स्टॉप करके अपना पैसा को इन अ सेफर प्लेस रखना चाहते होंगे, एंड दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल. हाउएवर, अभी बिकॉज द मार्केट इज मूविंग अपवर्ड्स, बुल्स आर कमिंग बैक, हम लोगों को टेक्निकली भी अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि we are doing better, we might be that this might be a start of a bull market rally. People eventually over the next 1-2 months you will see that this ratio will fall below 100. Lesser people will discontinue their SIPs, and more people will again start their SIPs. So if we leave overall in a very systematic way, the SIP growth in the country is growing. सिर्फ 9 crore इन्वेस्टर्स SIP बेस में है गाइस. 140 करोड़ देश है. 85-90% तो लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, उसमें भी ऑलमोस्ट 90% सैचुरेशन है, सबके पास इंटरनेट है. डीमैट अकाउंट्स की ग्रोथ होगी विद टाइम, SIP की बेस बढ़ेगी. सो स्कोप फॉर अ लॉट ऑफ द कैपिटल मार्केट स्टॉक्स इज इमेंस. ठीक है, तो मुझे यही बोलना था. आई होप यू गाइज अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू से. इट्स वेरी सिंपल, मार्केट बेटर डायरेक्शन में जा रहा है. अदर देन दैट, the TCS की results were also okay, nothing to be very happy about except for the people who are working, जिसको increment मिलेगा. However, उनका diversification का जो plans है, that is good. They want to move into infrastructure, they want to make data centers, they are acquiring a lot of companies, doing very good partnerships. तो एक्विजिशंस के थ्रू अपना रेवेन्यू बनाने, इनऑर्गेनिक वेज में रेवेन्यू ग्रोथ करने की कोशिश है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू करने की कोशिश है, विच वुड मेक TCS काफ़ी अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ एन IT कंपनी मे बी इन द नेक्स्ट 3 to 5 years, फ्रॉम जस्ट अ प्योर प्ले सर्विसेज कंपनी जो अपने इंटेलिजेंस को एक्सपोर्ट करता था, to an infrastructure to intelligence company. So long term holders of TCS might have to evaluate TCS in a different way. And also we spoke about the AMFI results on SIP inflows in the country, and I believe that is also in a good shape. So overall, that is all I wanted to share in the video. Tomorrow I'll be doing a video on I'll showcase the number of companies that we will be tracking across the result season जो अभी start हो गया है, and we'll discuss about what all we are going to track and वो important क्यों है. And other than that, guys, a lot of you are watching my videos. If you like the content I am sharing, please like and subscribe to my channel, because बहुत सारे लोग videos देख रहे हैं, and a lot of people are also, my friends and families are also personally messaging me and saying that the content is very good. तो अगर आप लोगों को content पसंद आ रहा है, please do like and subscribe, and I'll see you in the next video. Thank you.